Hello. So I'm your mentor, CA Anu Agarwal, back once again to help you crack your HSC economics paper. In our last class, we talked about how important chapter number 1 to 5 are, which will help you to get those more than 55 to 60 marks of paper आपको मिल जाएगा from that 80 marker. But हमको अगर वो 55-60 से out of 80 से ज़्यादा नंबर चाहिए तो we will have to essentially learn index number, finance, public finance and national income. तो index numbers पूरा नहीं पढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो इसके बारे में you should know और इसलिए भी जानना चाहिए because ये इतना कोई टेक्निकल और डिफिकल्ट नहीं है, रूटीन चीजें आती हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर इंडेक्स नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडेक्स नंबर्स. मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूं, डिफिकल्ट चीज को आसान बनाना, कंपेरेबल बनाना, समथिंग विच विल हेल्प यू टू टेक रीच अप टू कंक्लूजन्स, दैट्स व्हाट इंडेक्स नंबर डज फॉर अस. If you look at the chapter, index numbers, अगर definition लिखनी है, so this is a statistical tool. It's a device to measure changes in an economic variable or a group of variable over a period of time. तो ये क्या है? एक चेंज को मेजर करते हैं. जैसे हमने पिछले चैप्टर में इलास्टिसिटी किया था ना, आपको उसी नजर से आप सोचो कि इंडेक्स नंबर क्या करना चाह रहा है. टाइप के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है. सो बेसिकली व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर ट्राइंग टू डू? इट्स अ मेथड बाय विच आप एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, सिंपल टर्म्स में. इफ यू लुक एट इट नाउ, देयर आर डेफिनेशंस गिवन, आपको मन करे तो आप याद कर सकते हो, but I would really be interested because for the purpose of attempting a question paper, you need to know the features of index numbers, right? हमको ये याद करने पड़ेंगे. Let's look at the features of index number. It is a statistical device. Yes, index numbers are statistical device. Then index numbers are specialized averages. Index numbers are specialized averages. This is an assertion. Then the reasoning, जब उसका देने लगते हैं, so they are like index numbers are not capable of being expressed in terms of percentage. वो गलत हो गया. So they are specialized averages because they are comparing different situations, right? Different variables. So you have to write the whole thing. Index numbers are specialized averages which are capable of being expressed in terms of percentage. Next, so यहाँ का अगर हम बात करते हैं, this is S, इसका भी S हो गया. फिर इंडेक्स नंबर्स आर केपेबल ऑफ मेजरिंग बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल्स. इट इज मेजरिंग चेंज बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स और टू डिफरेंट लोकेलिटीज. तो यहां पर हम नेट चेंज, रिलेटेड वेरिएबल, मतलब इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी. दैट इट इज मेजरिंग नेट चेंज बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम्स और टू डिफरेंट लोकेलिटीज. फिर तो सिंगल वेरिएबल हो गया तो तुम्हारा यूनिवराइट इंडेक्स, एंड इफ इट इज बिटवीन और इट इज कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, इट इज कॉम्पोजिट इंडेक्स. अभी तक हमको 4 बातें याद हुई हैं. It is a statistical measure. It is a specialized averages which are capable of being expressed in terms of percentage. Index numbers is measuring the net change between related variables over a period of time or between two different times or two different localities. 3 चीजें याद हो गई. अगर सिंगल वेरिएबल को करते हैं तो यूनिवराइट, एक से ज्यादा वेरिएबल को होते हैं तो कॉम्पोजिट. 4 हो गए. आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गाइस? हम एक बेस ईयर कंसिडर करते हैं, राइट? और उसको हमेशा 100 मानते हैं और उसके बेसिस पर क्या चेंजेस हुए हैं उसको मेजर करते हैं. तो जिस साल को हम मेजर करते हैं उसको करंट ईयर बोलते हैं, ठीक है? तो दिस इज व्हाट, जो मैंने आपको भी समझाया वही उसके फीचर्स हो गए, राइट? सो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द ईयर for which the index number is being prepared is the current year. The year in which changes are being measured is called as the base year. Base year is always assumed to be 100.
Index numbers are also referred to as barometric of economic activity. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी सेट करती है, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, of course it's a barometric, it's a barometer for checking out your economic activity, how we are doing, how we are performing. तो गाइज याद हुआ, अगर मुझे इंडेक्स नंबर की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो 3 तो हमको याद हो गई. इंडेक्स नंबर में जिस साल का हमको कैलकुलेशन करना होता है वो करंट ईयर होता है. द ईयर which is the base on the basis of which we start calculating is the base year. Base year is always taken as 100. ये 3 characteristics हो गई. It is a barometer of economic activity. ये चौथी characteristic हो गई. It's a statistical measure. ये 5वीं characteristic हो गई. 5 याद हो गई. Next, it is a these are specialized averages which are capable of being expressed in terms of percentage. 6th हो गई. 7th is, it is measuring net change between related variables over a period of time or between 2 different time periods or between different localities. Yes, ये 7th हो गई. And last but not the least, अगर एक ही variable को consider करते हैं तो univariate, एक से ज़्यादा करते हैं तो composite. I hope after this आप at least features of index number लिख पाएंगे. Coming up further guys, examination purposes के लिए उन्होंने हमारे को कुछ चीजें बताई हैं. टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स. हमको इन चारों इंडेक्स के मतलब पता होने चाहिए. प्राइस इंडेक्स इट इज चेकिंग द जनरल प्राइस चेंजेस in the goods, right? Quantity index is talking about the changes in the level of output or the volume of production in the economy. Okay. Value index is talking about the product, the value of the commodity is the product of its price and quantity. मतलब value index आपको नहीं लग रहा price और quantity index का total है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ price changes देख रहे थे. यहाँ पर we were only talking about the changes in the quantity produced. But when we talk about value, we are talking about price and quantity. So value index number measures the changes in the value of a variable in terms of rupee. It is more informative index as it combines both price as well as quantity. याद हो गया? Price index में we are only checking the changes or we are measuring only the general changes in the prices of the goods. It is comparing the prices between the goods between 2 different time periods. That's a price index. Quantity index में हम price नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते, कितनी physical quantity या कितना physical volume of good has been produced in the economy. Value index is more informative because it is combining both price as well as the quantity. And special purpose index, it is for us, as the name suggests, it is for a special purpose. As it is saying, export import index है, productivity index है. Simple guys, index is a method by which, as I said, difficult चीज आसान हो सकती है because comparable हो सकती है. आप percentage में किसी चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसकी implication समझ सकते हैं. Now guys, coming up to significance of index numbers. I will do it for the purpose कि हम को चैप्टर हम कर रहे हैं, बट अगर आपको याद नहीं करना है तो you may just run through it only. Significance of index numbers, सबसे important significance है, it is a very powerful guideline for the policy makers. Right? It helps you to frame policies. पहले क्या inflation था, अब क्या है, what is the general price level, how it will help them to make suitable policies. It helps them to set the trends. For example, by examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw about the conclusion about the trend of industrial production. कि कैसे चल रहा है, क्या इस particular product की demand है, कितना production हो रहा है, right? So it shows you the trend, it helps you make policies, it helps you to forecast. हमने बात करी थी ना, it is a barometer of our economic activities. So obviously it helps you to make predictions for the futures based on the analysis of past and present trends, right? 3 चीजें याद हो गई, बहुत simple. What is the importance of index number? It is helping you to forecast, it is helping you to set policies, it is helping you to
understand the trends and the tendencies. And guys, next, it is helping you to measure inflation. Index numbers are helping you to understand that what is the changes in the price level from time to time. जितना हमको अगर समझ में आता है कि पहले हम 10 रुपए में एक एप्पल खरीद सकते थे और अब हमें उसी एक एप्पल को खरीदने के लिए 20 रुपए देना पड़ रहा है, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन दैट ओके सेम थिंग इज बीइंग अवेलेबल at a more expensive price. Now this is inflation index. So it is a measure of inflation. It is useful to present financial data in real terms. This is very important. Real terms. एक होता है monetary terms में मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए, right? But वो 10 लाख रुपए अगर मेरे पास 1970 में थे, तो guys at that time इन्फ्लेशन वॉज लोअर, द इंडेक्स नंबर के हिसाब से 10 लाख रुपए होना आज की डेट के हिसाब से इज एज गुड एज 10 करोड़ रुपए होना, राइट? बट आज के हिसाब से मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो बेटा बहुत कम रुपए है. ये सब मैं कैसे कंपैरिजन कर पा रही हूँ? बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, दिस इज इंडेक्स नंबर कि उस समय क्या प्राइस लेवल था, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस समय. हैविंग दैट टेस्ट 10 लाख रुपीज व्हेन एवरीबडी इन द इकोनॉमी that 1% people or 2% people were having 10 lakh rupees and I was one of them. I was rich. But having 10 lakh rupees today, as per the current situation, having 10 lakh rupees is not a big deal. So how am I able to take up this decision? It's because मेरे को वो 10 लाख रुपीस को अगर जो मेरे पास 1970 में थे अगर मुझे आज के हिसाब से कंपेयर करना, आई ब्रिंग इट टू द करंट वैल्यू दैट ओके 1970 को मैंने बेस ईयर लिया विच वाज 100 एंड क्या चेंजेस आए हैं. आई look at those changes and I multiply with those changes and I realize that 10 lakh rupees in 1970 is equivalent to 10 crores today. तो I am able to find out my real situation. इसीलिए वो बोल रहे हैं index numbers helps you to find out or present data in real terms. Guys, याद हो गया? What are the benefits of index numbers? It helps you to put financial data in real terms. Real terms मैंने आपको समझा दिया. It helps you to determine or identify inflation या measure inflation. It helps you to government to make policies. It helps you to find out the trend. And yes, it helps you to forecast. Yes, याद हो गया guys? Forecast करने में help, trend बताने में help, inflation बताने में help, policy बनाने में help, real financial data बनाने में help. इंडेक्स नंबर ऐसा मदद करता है. मैं इसके शॉर्टकट्स नहीं बता रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम इंडेक्स नंबर्स को वी आर ट्राइंग टू गो थ्रू दिस चैप्टर, ट्राइंग टू टेल यू कि इफ अ क्वेश्चन कम्स डोंट लीव इट बिकॉज इट्स वेरी इजी, राइट? एंड अगर पढ़ के ही नहीं जाओगे तो फिर दुख लगेगा कि यार व्हाट इफ आई वुड हैव जस्ट लुक्ड इनटू दैट चैप्टर. नाउ हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The purpose for constructing the index number, its scope, as well as for which variable it is intended to be measured should be clearly decided to achieve the fruitful result. मैं किस चीज के लिए index number build करना चाहती हूँ? What is the purpose of the index number? Then I need to select the base year, right? Base year is also called as the reference year, right? If जैसे income tax में earlier the base year was 1981. On the basis of 1981, we had 81 was the base year, and on that basis next year was 100, then 109, then 116, then 125. So 1981 was the base year. Then it was realized no, things have changed and taking 81 as the base year is not a great idea. So base year was changed. Then they said okay, we'll make base year as year 2000. So what I'm trying to tell you is that you need to identify the base year because that base year is the reference year. So, base year is your reference year. It is a year against which comparisons would be made. It should be free from natural calamities. It should not be too distant. क्या होता है? ये ऐसा साल होना चाहिए जिसमें कुछ abnormal या unforeseen चीज हुई है. Then you can't take that as a assessment, the base year.
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इनकम टैक्स में फॉर कैपिटल गेन पर्पसेस पहले 1981 यूज्ड टू बी द बेस ईयर. देन द गवर्नमेंट थॉट कि भाई 1981 से तो अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग 81 एज द बेस ईयर. देन इट वाज चेंज्ड दैट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स विल स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम 2001 and instead of 81 we switched to 2001. So selection of the base year is very very important. It should be free from natural calamities. It should not be too distant in the past. ये बहुत important है. तो इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है गाइज? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पसेस. सो इंडेक्स नंबर क्यों बनना है, क्या पर्पस है, उसी हिसाब से यू गोइंग टू चूज द वेरिएबल. व्हाट इज गोइंग टू बी योर बेस ईयर, राइट? नेक्स्ट गाइज, you need to, the third thing is you need to select the items. It is necessary to select a sample of number of items to be included in the construction of a particular index. आपके क्वेश्चन पेपर में एक रीजनिंग असर्शन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें it was like this, that index number considers all factors. It was the assertion. And reasoning was index numbers is not based on samples. अब आप खुद देखो, आंसर कर सकते हो. It is necessary to select a sample of number of items to be included. Index number की construction के लिए you select a sample only, right? And yes, index number is not considering all factors. कैसे लेके चल रहे हैं वो? इंडेक्स नंबर किस पर्पस के लिए बना उसी के हिसाब से इंडेक्स नंबर्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. नो, सो ऑटोमेटिकली यू कुड हैव आंसर्ड दैट यस, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट रीजनिंग assertion में which is true, what is false. If you know the concept, you will be able to answer. So it is necessary to select a sample. So index numbers are based on sample. Next is you have to selection talking about यहां पर, जस्ट अ सेकेंड गाइज, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, उन्होंने एक बहुत अच्छा इन्होंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स, it is impossible to include each and every commodity. This itself answers, it does not consider every thing, it only goes by sample. The commodities to be selected should represent the taste, habit and customs of the people. Besides this, only standardized or graded items should be included in order to give better results. इसका मतलब इंडेक्स नंबर में हम हर चीज नहीं ले सकते. We have to take samples which should be representative of that particular variable about which we want to compute or forecast the results. Am I very sound and clear? Next coming up, तो पहला हो गया हमको किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर्स बनाना है. सेकेंड इज हम बेस ईयर सेलेक्ट करें. थर्ड इज वी शुड सेलेक्ट द सैंपल. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन. द प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप. So therefore it is desirable that price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency. अगर आप अनरेगुलेटेड मार्केट में, या एज आई सेड, जैसे कि इन्होंने लिखा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस हो सकता है, बट हमको अगर राइटफुल कैलकुलेशंस करने हैं तो हमको वो प्राइसेस लेने चाहिए जो अनबाइस्ड हो, राइट? टू अचीव एन एक्यूरेसी एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आप एक छोटी सी जगह, एक पर्टिकुलर आइटम इस प्राइस पे बिक रहा है, उसके बेसिस पर आप इंडेक्स नंबर नहीं कंप्यूट कर सकते. जनरली this is what is very very important, to identify the suitable person, to identify the suitable place. That's very important, because then only you will be able to get the right conclusion. You will be able to reach up to the right conclusion. तो ये आपके उसमें बहुत जरूरी है, that selection of the price quotations, because prices can vary. You need to be very particular that where these quotations are coming from. Then choice of suitable averages.
Construction of index numbers requires choice of suitable average. Generally, arithmetic mean is used for the purpose of construction because it is simple to compute compared to other averages. बहुत तरीकों से हम averages निकालते हैं in maths, mean, median, mode, lots of ways. But amongst all, mean is considered to be the easiest. So the mathematical index, for the purpose of index, we are using arithmetical mean as the method for calculation. And yes, then you need to give proper weights. Weights दो तरीके के होते हैं, quantity weights और value weights. Since all items are not of equal importance, giving them specific weights will help you to achieve better results. Selection of appropriate formula, choice of a suitable formula depends upon क्या purpose है आपके index number का. Guys, you're not getting a long question wherein how to construct index numbers, but यहाँ से आपको reasoning, assertion वाला part आ सकता है, 3 marks के लिए आ सकता है. Generally भी अगर आप इस particular portion को देखें, इस particular area को देखें, ये मेरे लिए from exam point of view सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. This is what a student should know, that how do we build up. आपसे question आ सकता है that arithmetical mean is the average selected for the purpose of calculation of index number. ये assertion हो सकता है. Reasoning इसकी कुछ weird दे दें that mode is the easiest way of calculating average. No, that's wrong. Reasoning is wrong. Whatever. I'm trying to tell you this area is important for me. ठीक है कि आप किस तरीके से index number को construct करते हैं. तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका स्कोप किस वेरिएबल के लिए आप ये करना चाहते हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड. योर बेस ईयर शुड बी डिफाइंड. बेस ईयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. आइटम शुड बी सिलेक्टेड. द सैंपल विच यू सिलेक्ट शुड बी वेरी वेरी प्रॉपरली एंड थॉटफुली आइडेंटिफाइड. यू शुड select the price quotations again in a thoughtful manner which should be representative of that particular item, and the price should be representative. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक price of some place, because prices differ. So they are very clear that you should be, quotations should be obtained from unbiased places. You should choose a suitable average, and they are very clear. Arithmetical mean is what is being used. You should choose a proper weight, right? Because that's very important. And then last but not the least, you should choose the appropriate formula. An index number ke liye there are 2 methods. One is simple index and the next is weighted index number. Simple index number mein, guys, it is summation of price divided by summation of price P0. P0 matlab base year ho gaya. P1 is the current year. तो जितना prices of the current year है, this is sum total of the prices of the base year. So look at it. यहाँ पर this is your 2010 is the base year. What is the total of this? 2220 है. This is 2015 जिसका आप comparison करना चाह रहे हो. This is 300. So price index क्या हो गया? In comparison to 2010, A commodity which was available for 20 is now available for 30. B which was available for 60 is now available for 80. C which was available for 100 is now available for 130. What you have done? You've taken for 2010 the सारी commodities नहीं, ये selected commodities होंगी A, B, C, D. उनके basis पर आपने उनका summation लिया. That sum of the price of year 2010 के हिसाब से 220 was good to buy these 4 quantities. Now those 4 quantities in 2015, which is your current year, is available at 300. So what is the change? It is 300 divided by 220 is 136. Yes, this is a simple price index जहाँ पे you are just taking up the comparison between the price of certain commodities, which is a sample which you have taken up, and comparing it with the current year. Similarly, quantity index where you are comparing the quantity or the volume which is being produced now in comparison to the base year. Right? So you'll have an example here. So look at it. This is your base year, A, B, C, D commodities. Quantity was 210 in for these 4 units for these 4 commodities.
And in 2001, which is your current year, it is 280. So what is your quantity price index? 280 divided by 210. This is simple average, wherein when I took up price index, I was just taking up price of the current year with respect to summation of the price of the base year. When I was taking up quantity index, I was taking up this summation of quantity of the current year divided by the summation of quantity of the base year. But when I am going about value index number, then I need to take up price multiplied by quantity. बस इतना सा फर्क है, because it is value. क्या हो जाएगा यहाँ पर? Price multiplied by quantity. Quantity P, उसके base year में they have given us your price, they have given you the quantity. You just multiply price into quantity, right? Take a sum of all those. Similarly, for the current year, they have given you the price and they have given you the quantity. You can take up and do the calculations. So, in case of quantity value index, you are multiplying price with the quantity. In case of price and quantity, you are only taking up price and quantity, and this was simple method of calculating the index. There were no weights appointed. मतलब जब मैंने A, B, C, D लिया था, मैंने कोई weights नहीं दिया था. मैंने 4 products लिए थे, उनके चारों के prices दिया था, और मैंने I just took up the total and I went ahead. I did not assign any weight to it, right? अब यही चीज if I want to do it by weighted index number, then what is going to happen? Look at it. Now comes up to weighted index. Weighted मतलब I'll have to assign some importance to something in the data. कोई चीज ज़्यादा important है, कैसे पता चलेगा? So weighted index के लिए we are going to use some weights, and different methods have been given. For our course, it is Laspreys and Pache. As per Laspreys, they said we will take base year quantity as the weight. So look at it. It is summation P1 into quantity of the base year. Can you see that? So it is summation P1. So the price is of the current year, but this price is being multiplied with the quantity of base year divided by price and the quantity of the base year. Am I very sound and clear? So as per Laspreys, base year quantity was the weight, and on the basis of Pache, the current year quantity was the weight. So here it was current year price multiplied by current year quantity divided by current base year price multiplied by the current year quantity. So now look at the example from your own textbooks. This is the base year, this is the current year. So this is price of quantity product A, and I have multiplied it with the quantity of the base year. Can you see that? P1 into Q0, and for my base year, it is P0 into Q0 only. That's not an issue, because for Laspreys, it was the base year quantity which is the weight. Am I clear? But when I solve the same thing as per Pache, then in that particular situation, it is the current year quantity which is going to be the base. So it is price P1 into Q1, and here it will be base year के लिए it will be price 0 multiplied by the quantity of the current year. This is all what is there as far as index numbers are concerned, friends, right? Of course, then they are talking about that what are the limitations of index numbers. Of course, limitations are, because सबसे बड़ा limitation तो यही है that it is being based on samples. The data can be biased, and the index numbers can be misused, and various changes are happening in the economy. The index numbers may not be, capable enough of absorbing all the changes fast enough.
So technically ये पर्टिकुलर चीज पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रही हूँ, जैसा कि हमने बात करी कि इंडेक्स नंबर्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक अगर आप छोड़ देते तो आपको बहुत दुख होता है. अगर हम क्विक रिविजन करें तो इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल्स. हमारे पास सिंपल और वेटेड एवरेज मेथड है. वेटेड एवरेज में हमारे पास लैस्परेज और पाश है. दोनों में डिफरेंस ये है कि दे आर जस्ट गिविंग यू वेट. लैस्परेज में हम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट लेते हैं, पाश में हम करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेते हैं. इन केस ऑफ सिंपल एवरेज हम कोई वेट नहीं लेते हैं. 3 टाइप के इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं. वन इज क्वांटिटी, वन इज प्राइस एंड द अदर इज वैल्यू. हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So with this we come to an end as far as this particular chapter index numbers is concerned. I hope all of you have understood index numbers and you have understood where and at what places I've really emphasized. You will keep a track of those things, and trust me, after this at least another 5 to 6 marks, which earlier if you would not have studied your chapter number 6 शायद मिस आउट हो जाते, बट अब नहीं हो पाएंगे. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. इफ यू हैव एंजॉयड माय सेशन, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन नेशनल इनकम, which will be releasing soon. Till then, study well and see you in my next class.